Dear students, we'll be talking about individual command tasks. Individual command task is the second last task of group testing officer. And in this, what it is done is that a candidate is given a chance to command, call people and get the things done. इंडिविजुअल कमांड टास्क एक टास्क है जो आखिरी से फाइनल ग्रुप टास्क पहले करवाया जाता है। इसमें हर अभ्यर्थी, हर कैंडिडेट को एक मौका दिया जाता है कि वो दो या दो से अधिक लोगों की मदद से कोई कार्य को संपूर्ण करे। इससे उसकी नेतृत्व क्षमता देखी जाती है, साथ साथ में उसकी एक दृष्टिकोण देखा जाता है कि उसमें कितना टीमशिप कैप्टनसी वाला सिस्टम है कि वो सबसे काम भी करा लेता है सामंजस्य के साथ। तो इंडिविजुअल कमांड टास्क एक तरीके से एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसमें दो रोल देखे जाते हैं, कमांडर के रूप में, क्योंकि आप कभी कमांड करने के लिए एक मौका मिलेगा और आपको दूसरे के अधीनस्थ में रहने के कई मौके भी मिलेंगे। तो ऐसे में वो ये देखते हैं कितने लोग आपको अपने साथ टीम में स्वीकार करते हैं, तो वो भी देखा जाता है कितने लोग ने आपको बुलाया या स्वीकार किया। दूसरी चीज वो ये भी देखते हैं कि अगर आप जाते हैं तो कितनी आप सहयोग देते हैं। अब आपको कोई लोग क्यों बुलाएंगे, ये आपके व्यवहार पे डिपेंडेंट होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर बिहेवियर, व्हाई पीपल विल कॉल यू। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर एंटायर स्टे ऑफ एसएसबी इन द एसएसबी सेंटर। जो एसएसबी सेंटर में आप रहे हैं पूरे समय के अंतराल के बेसिस में कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बुलाते हैं, और कुछ लोग आपको नहीं बुलाएंगे। और वो ये देखना इसलिए है, दे वांट टू सी योर ग्रुप एक्सेप्टेबिलिटी आल्सो। सो देयर आर 3 सेक्शंस। नंबर 1 कमांडर का रोल, नंबर 2 फॉलोअर का रोल, नंबर 3 आपको कितने लोग स्वीकृति दे रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर एक्सपेक्टिंग। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस दैट GTO इज अबाउट गेस्टॉल्ट थ्योरी। गेस्टॉल्ट थ्योरी मीन्स लुक यू इन दी ग्रुप। ग्रुप में आपका कैसा बिहेवियर, ग्रुप में आप कैसे बिहेव करते हो। आपको मैंने पहले से शुरुआत से कहा है, वी हैव सेड इट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट यू शुड हैव अ ग्रुप बिहेवियर ऑफ अ वी अप्रोच। वी नॉट आई, नॉट मी। आपको मैं और अहम वाली रवैया छोड़ देना चाहिए और हम वाले रवैया पे काम करना चाहिए। तभी आप टीम बना सकेंगे, तभी आप नेतृत्व कर सकेंगे। और ग्रुप टेस्टिंग में यही देखा जाता है। It is seen. Let's start with this. It is an important task. Individual command task is an important task to assess an individual's ability to perform as a leader and as a subordinate. दोनों देखा जाता है. As the candidate has already gone through a learning exercise via the process of progressive group task and half group task. आप लोग वैसे भी सीख चुके हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क 4 किए, हाफ ग्रुप टास्क 1 किया, तो उसी से मिलता जुलता इंडिविजुअल कमांड टास्क में अब आपके पास काफी आइडिया है, आप व्यवहार सक्षम है, तो आप काम कर सकते हैं। इफ यू आर केपेबल टू एक्ट, यू कैन डू इट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी टेस्टेड। नाउ इन दिस अ सिंगल टास्क इज असाइन्ड, एक काम दिया जाता है, सेम एज इन केस ऑफ हाफ ग्रुप टास्क, एक ही दिया जाता है कमांडर के रूप। आपको अधीनस्थ के रूप में डिपेंडेंट अदर्स कॉल यू, देन यू विल बी डूइंग 1 or 2 more tasks, right? But as a helper, not as a thinker. But as a thinker, as a commander, you will be given only one task. एक ही टास्क दिया जाएगा आपको। Individual command task is a leadership task. ये देखते हैं कि how do you do it? There are some people who overdo it. वो जबरदस्ती कमांडर, yes, we will go to do this stuff, ये सब करने लगते हैं। वो मत करिए। Be a normal leader. सोच में लीडरशिप होनी चाहिए, काम में लीडरशिप होनी चाहिए, सामंजस्य से लीडरशिप होनी चाहिए। Always remember, leader sets an example. हमेशा याद रखिए, नेतृत्व में एक आदमी उदाहरण बनाता है, सामंजस्य का नेतृत्व करता है, आगे बढ़ के करता है। Remember that. As here one is allotted as a leader commander for the task. उसको कमांडर लीडर की तरह बनाया जाता है and is provided with the choice of selecting 1, 2, maybe more subordinate. जो allotted group है उसमें ज्यादा लोगों को भी डाला जा सकता है। Is it clear? So that is something which you have to do. ये टास्क जितना अच्छा करेंगे, you will do very well. You don't have to deliberately pump up your volume. You just have to maintain the same momentum. I have always requested candidate, मैंने हमेशा कैंडिडेट से निवेदन किया, शुरू से लेके आखिरी तक एक मोमेंटम रखिए, एक निरंतरता रखिए, एक चाल रखिए, एक लय रखिए,
Remember, I have spent a short time in the training academy, yes. I have spent a lot of time training candidates, yes. I have also been a psychological doctorate I've done, and I've done it only on your subject, yes. Now, where do I get the honor to help you with this? 1250 plus selections we've already done. No, every candidate did not, I did not do it, they did it. But in the process, I learned from the mistakes, I learned from their behavior, I learned from the variety. इसीलिए Lamulchar Academy was able to always give results. Last year also we gave you an All India rank second. We have been giving it regularly over the period. We give you transparent results. It is not this that so and so is a photograph. No, we give you the results. Address भी देते हैं उसके साथ. आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं. So it is a very transparent system. You have to understand and you have to perform. बीच में इसलिए बोला क्योंकि आप जब तक मुझे स्वीकार नहीं करेंगे आप ये सीखेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं काम नहीं बनेगा. So let's go ahead. Individual command task is a leadership task. Here one is allotted as a leader commander for the task and is provided with the choice of selecting one or two and उनसे काम कराना है. काम कराने में अच्छे से निर्णय देना है, उनको अच्छे से दिशा देनी है, साथ में भागीदारी लेनी है. अब इसका ये तात्पर्य नहीं हुआ कि आप बिल्कुल सब कुछ खुद करने लगेंगे, बल्कि उनसे करवाएंगे पर साथ में करेंगे भी. वर्क एज अ टीम कैप्टन. Remember Mahendra Singh Dhoni, wonderful captain, wonderful leadership example. Every leader who sets an example by working hard is a true leader. No leadership is done behind. You have remembered the best rising star in history. We have Shershah Suri. उन्होंने कितनी सारी चीजें बनाई, पर कहाँ से उठे? जमीन से एक सैनिक से बन के बाद में वो पूरे देश के एक शहंशाह बने और उन्होंने मुगल साम्राज्य को उठा बाहर फेंका. He created so many administrative structures. चलिए इससे ज्यादा दूर नहीं जाएं, हमारे माननीय मोदी को देख लीजिए. माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जमीन से उठ के नेतृत्व किया. चलिए उनको भी छोड़ दीजिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए. Whenever you will see, you will get beautiful examples of leadership. It's not by sitting in an AC room and commanding. It is by coming on the ground and walking and doing it. Do it. Okay, here we go down to the next point. Individual command task sees what? Number one, instructor. कि आप किस तरीके से instruct करते. Candidate must give clear and logical instruction, the best of tone and words in order to be well received by the chosen subordinate. जब आप काम कराते हैं, remember they are your colleagues also, they are now subordinates. You will have to adopt a right approach, the right language, right tone. So when you call somebody, you will have to tell them, dear system 1, system 5, we are starting from here, we're going there. We have to get this done as we have done before. Sir has told us that we have not to use the ground. So let's plan it up. My plan, please come. Let's help me in the plan. The plan is that we're going to make this. You please tie it properly. This is the way to do it. And get participant also. Check what has been done. जो करना चेक करो, खुद भी हाथ लगाओ, परवाह करो, they don't get hurt. ये नहीं कि पटरा लगाते समय एक का हाथ आ गया नीचे. Let it not happen. That is what is a good instructor. Instructor not only gives but also cares. Do it. Next, decision maker. You'll have to decide, okay, let's do this. Initially, you should work with all the decisions. Worst come worst circumstance, if you get stuck, and then the officer tells you that you can take the help, take it confidently. जब officer आपसे बोलता है कि चलिए उनसे ले लीजिए, तो बहुत confidently लीजिए. Okay, you have any suggestions? Okay, okay. और जो भी suggestion लीजिए तो उसको check करिए. ये तो लास्ट की चीज, पर शुरुआत में आपको इतने आइडिया हो गए, वर्क करिए. Just keep planning, just keep focusing, just look at the structure. Concentrate, you will get the answer. किस प्रकार का स्ट्रक्चर में रहा होगा भाई? आपको मार्स थोड़ी ना ले जा रहे हैं. They are not taking to मंगल या मार्स या जुपिटर या सैटर्न. You're getting the point. They are taking you to a normal structure. So look at that and solve it. So now the decision must be able to. Decision making is always, remember, when you will be in the ground, you will automatically and have your radar open. आपका radar खुला है,
देखिए मैंने मेरा मजाक ऑन द लाइटर साइड, आई शेव्ड ऑफ टू कीप माई रडार शाइनिंग एंड क्लियर। जोक सपाट, मजाक को किनारे रखें, पर अपनी फोकस को क्लियर रखें, रडार ओपन रखें, अलर्ट है। और अगर आप बीच में हैं तो आप डिसीजन ले ही लेंगे, आपको एक्सपोजर भी मिल चुका है, तो फिर किस बात का डरना, हो जाएगा। अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, डरना बंद कीजिए। डोंट वरी अबाउट द इवैल्यूएशन, ये चिंता मत करिए कि क्या इवैल्यूएट हो रहा है, बस enjoy your work, enjoy with your team to work and you will be doing it well। बहुत सारे स्टूडेंट्स could not complete the task as commander, अटक गए, कोई बात नहीं, फिर भी रिकमेंड, not because could not do that task, because they exhibited the right behavior, trainable। हाई एटीट्यूड नहीं चाहिए, you don't have to suddenly become a general in the army, you'll begin with the lessons, so learn to be polite and active। Polite does not mean murmuring, मरमरिंग माने फुसफुसाइए मत, खोल के बोलिए, पर पोलाइट टोन में बात कीजिए, वाजिब टोन में बात कीजिए। वर्क एज a team member, leader, the candidate must be able to lead by maintaining a good composure, cool रही, एनालाइज वेल, सही से सोचिए, अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, तो ये है, एंड रिजॉल्व चैलेंजेस, ट्राई टू सॉल्व, अच्छा केयरफुली करना, अच्छा ये होगा, यू विल गेट ऑल द आइडियाज, डोंट यू वरी। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्ट टू बी चेयरफुली मोटिवेटिंग। दूसरा, वेरी गुड, आगे और करो, इसको हाँ ठीक से बांधो, वेरी गुड, दैट्स ऑल। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई कैंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नाउ डूइंग अ रोल, एंड डू दैट माइनस एनी एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन। इरिटेट मत हो, ये कैसे कर रहे हो यार, वो कैसे कर रहे हो, डोंट डू दैट। ओके ना, वो माइंड नहीं हो रहा, उसको और टाइट करो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। गिव देम कूल। अगेन आई एम टेकिंग यू बैक टू महेंद्र सिंह धोनी, लर्न टू डू दैट। इफ यू विल गेट इरिटेटेड, व्हाट विल हैपन, इट विल शो दैट यू आर वीक, यू हैव लेस स्टेमिना, यू कैन नॉट मैनेज स्ट्रेस। तनाव को मैनेज नहीं कर, रिलैक्स, डू इट इजी। एग्रेशन एंड बेलिजरेंस नहीं दिखाना है। हो सकता है अफसर बोले, come on, hurry up, last 2 minutes, so don't get angry with them, just say yes, come on, let's do it fast, do it। Don't feel that you have to become aggressive, please make it a point। If I'm giving you a detailed thing, I'm giving you with a lot of experience, and trust me, I respect all the officers who teach anywhere and everywhere, because they are coming fresh from the army। I'll also learn from my students who are already in different sections, what are the patterns you are following। I don't recommend candidates, I don't want to spoil the career of anyone for that matter by involving them, but yes, I learn from every officer who opens a academy once he comes back. What is the principle, what is the filter, whether you take it to anyone, any of the academies, I'm shameless to say that, I honestly am telling you, I do, because I am not here to experiment an adventure। मेरे को कोई आपके साथ मजाक थोड़ी ना कर रहा है, आपका कैरियर जहां से भी अच्छे विचार आते हैं, अगर वो विचार लॉजिकल है, एक दृष्टिकोण बढ़ाते हैं, तो आपको कई बहुयामी बनाना है, I have to make you multiple, so why not I involve all the viewpoints of others। मैं ये करता हूं, तो आप ध्यान दीजिए। Be cheerful, motivating, set an example by leading from front, come on, let's do this, अच्छा ठीक है, let me also come, चाहिए, बीच में पार्टिसिपेट करिए, दूसरे को भी बुलाइए, got it, got the point, visualize, you'll do it, see that, and sense of responsibility towards successful, do it। Now we come down to the next is stress handling, बहुत important। stress handling मत करिए, मेन पॉइंट्स याद रखा करिए। स्ट्रेस हैंडलिंग, तनाव मत होइए, वो बोल रहा होगा, जल्दी करो 2 मिनट, सो डोंट बिकम डिस्टर्ब, जस्ट से यस, बट दैट डज नॉट मीन स्माइल ऑन हिम, क्या ठीक है हो रहा है, डोंट डू दैट। ही से यस सर, कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट, बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। उनके कहने पे आपने वॉइस या अपने साथ के कैंडिडेट्स या अपने चेस नंबर्स को बोला कि कम ऑन लेट्स डू इट फास्ट, इज ओके, बट नाउ कम ऑन, व्हाई यू नॉट डूइंग, ये नहीं करना है। Just relax, do it properly। हरी करिए, बट
तनाव में मत करिए, जल्दी करिए पर तनाव मत. Got it? Okay. Expected to handle all stress-provoking instructions by the officer. He does it deliberately. He wants to put you in stress. He wants to see how you handle it. There are some people coolest, and they are able to work hard. Do it. As the officer will put to test the mental stamina of the candidate needs to hurry up, but not panic. बड़बड़ाना नहीं है, जल्दी करना है, पर बड़बड़ाना नहीं. बड़बड़ाना और जल्दी करने में अंतर होता है. एबिलिटी टू इनोवेट, कुछ नयापन भी डालिए. आप फंस रहे हैं, सोचिए, अच्छा ओके, जुगाड़ सोचिए. थिंक ऑफ इनोवेशंस, थिंक ऑफ रिसोर्सफुलनेस. अच्छा ये कम हो रहा है तो इसमें ऐसे मान लें, गांठ से हो जाएगा. राइट. एबिलिटी टू इनोवेट. द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू विजुअलाइज एन इनोवेटिव सोल्यूशन व्हेन कंडीशंस गिवन आर कॉम्प्लिकेटेड. वो कॉम्प्लिकेट होती भी हैं और कॉम्प्लिकेट बनाई भी जाती है. ये सब लोग जानते हैं कि जब उनको कोई अच्छा कैंडिडेट लगता है तो वो उसको उलझाने की कोशिश. क्यों? Why? Because they want to go into the depth of the thoughts. क्या वो कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति में कर लेगा? They want to check that out. So they do that. By giving alterations, making complications, they do that. Extra instruction देता है, चलिए हटा दीजिए. This is out. Now you do it. So they try to do that. Why? They want to check your both qualities. Stress handling and ability to innovate. Are you able to innovate? That's it. And innovation does not mean invention. ठीक है, innovation का ये तात्पर्य नहीं कि कोई आविष्कार करना है ना ही कोई बड़ी खोज करनी है. वो सब सरल होती है. बस अगर आप फोकस रखेंगे तो आपको जुगाड़ दिख जाएगी. फोकस रखेंगे आपको सोल्यूशन दिख जाएंगे. पर अगर आप हड़बड़ाएंगे, दूसरे के कहने पे और हड़बड़ाएंगे, तो आपको दिखाई नहीं देगा काम क्या करना. कई बार कुछ लोग जल्दी जब करते हैं तो वो एक प्रोसीजर मन में नहीं फॉलो करते. उदाहरण के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जब वो जल्दी करते हैं तो एक दो चीज भूल जाते. मत भूलिए, रिलैक्स करिए. मुझे अपने वालिद की याद आती है. माय फादर, ही वाज आल्सो अ वेरी ओल्ड वेटरन, and whenever he also had done GTO course and other things, and from him I learned a lot. He always had a checklist program. वो चाहे कहीं भी जाते थे, वो एक checklist बनाते थे. Right from identity card, toothpaste, shaving kit, everything was written there, top to bottom. And checklist के साथ वो सब चीज रखते थे. एक दिन पहले तैयार कर लेते थे और उसमें सब चेक करते जाते थे, टिक करते जाते, सामान रखते जाते थे. उनका सूटकेस हमेशा कंप्लीट होता. My suitcase, because of my hurry, sometimes it was not complete. So never mind. Now please pay attention. But I learned from him and I improved myself. Is it clear? Now we come down to ability to incorporate ideas. नए ideas कैसे लेंगे? अब कुछ नए ideas आए, the candidate is expected to, in case given by the group testing officer. कभी group testing officer आपसे बोलता है, okay, use that structure. So now doesn't mean, sir, please don't tell me. Don't do that. He has given you direction, accept it, and then do it. Try to do it. That is incorporating ideas. And work on it. And try doing it. Even if he is giving you as a hint, take it. Even if he is asking you to do it that way, do it. That is incorporation. जो भी बोला जाए करिए. कभी आपको दूसरे सुझाव भी लगेंगे, तो use it. Subordination. Candidates are expected to also be dynamic to adopt the subordinate. जब आप किसी के अधीन करने जाएंगे तो भी अच्छे से करिए. ये नहीं कि उसके साथ अकड़ रहे. अगर उसने गलत बोल भी दिया तो उसको टॉलरेट करना सीखिए. Learn to tolerate. Don't get angry with him. That how do you talk? Do you have an ego at a 16 years age, 21 years age? Now what should I do with my ego at 55 years age? Or a brigadier who's teaching you doing at plus age? What are you going to do that? Keep the ego away. Education, focus, work, more important. So subordination करने जाएंगे, अच्छे से करिए. Do it with help. Try to genuinely help. If he is doing some mistake, try with your action to correct his mistake. Try to make him successful. Team spirit, team spirit. Remember that. You are not there to spoil others' work. You are there to help everyone get selected. What a beautiful style.
And when you will do that with yourself also there, trust me, you will get selected. Trust me, you will get selected. Provided you're a good communicator, you're talking in the right tone, you will get selected because you are a good man, good woman, or whatever you call yourself. Good candidate. Is it okay? Boys and girls, happy? Yep. See, I'm sorry. I got into this habit of addressing men more than girls. It is simply because I've been teaching early. And when I was a part of that area, the girls were not so many. Rather, girls' entry came in 96. We were there in 91. So long before. Yes or no? So, please understand that and forgive me if you feel hurt. Okay. Subordination. Got it? And now sense of responsibility. What is sense of responsibility? You should feel that it is to be completed. Sir, I can't complete it, leave it. Sir, I cannot do it. Now, this is not to be done. The GTO is standing there, so I'm trying to pretend that he is there. मत करिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, काम करना है, इसको करवाना है, पूरा होना है, चलो करते, जल्दी करते, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए. वो टाइम के देंगे 5-5 मिनट, ट्राई टू डू इट फास्ट, यू डू इट, डोंट वरी. तनाव में कई बार कुछ लोग को पैम्पर्ड होते हैं, माँ बाप ने कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया तो सख्त समय को झेल नहीं पाते. कोई उनको टोकता है तो उनको बुरा लगता है. अभी इसका हम क्या करें? आपके माँ बाप ने आपको समय से डांटा नहीं, सुधारा नहीं, तो उसकी गलती दूसरा क्यों झेलेगा? एक कहते हैं ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड. बच्चे को अगर समय से डंडा नहीं मारोगे वो नहीं सीखेगा. सीखने के क्या तरीके? रिवार्ड एंड पनिशमेंट. अगर उसको रिवार्ड दे रहे हो तो पनिशमेंट भी दो. अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसकी मानसिकता, उसके जीवन से खिलवाड़ करते हैं माँ बाप लोग जब उसको पैम्पर कर देते, क्योंकि हमेशा तो उनके साथ रहेंगे नहीं. They will not be there forever with him. Now, when he will come across difficult situation, he'll get irritated. Who's responsible? Parents, not taught right. भाई थोड़ा सा डंडा चलना चाहिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे चलाना चाहिए. Let them learn that sometimes difficulties are there. Sometimes, okay, I'm there to help you, but they should educate. नहीं, अगर चलिए ये भी नहीं, आप उनके साथ रहिए, उनके साथ उनको सिखाइए कि देखो बेटा ये गलती हो रही है, मैंने देखो इसको संभाला, समझे? कभी कभी उनको भी गलती सीखने दीजिए. अगर कोई बच्चा कभी गोद से नहीं उतरेगा तो चलना कैसे सीखेगा? If a person will never get out of the lap, how will he learn to walk? Similarly, everything falls into place. इसीलिए कई लोग रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं होते या पैम्पर्ड होते, तो उनको अगर टोक दो तो चिड़चिड़ा जाते. बीच में मत बोलो, मेरे पापा ऐसे नहीं बोलते थे. अरे तुम्हारे पापा से हमें क्या लेना है? This organization, everything can happen anywhere. A senior officer may ask you, hurry up. तो इससे इरिटेट नहीं होना है, कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, समझदार बनना है. आपने जो गलती बचपन में की या नहीं की या देखा, सीखिए, अपने रवैये को बेहतर कीजिए. बिकम मोर मैच्योर्ड, मोर रिस्पॉन्सिबल and more active, more intelligent. That's what we are looking for. It's a group, it's a team, it's your courage, it's your mental ability. Nobody is going to abuse you. But if you will get irritated in small thing, I'm sorry, you are the most stupid person in the world. You should not get irritated. You should understand. कोई डांट रहा है तो उसके साथ लड़ने थोड़ी ना चले जाओ. समझो, हो सकता है उस डांट में उसका आशीर्वाद है. Scolding you for better. I am being honest to you that my father was a very good, perfect man. He was a man who had a lot of ideas, a lot of things. He used to scold too often, I agree. But every time if I look back today, I realize all his scolding was to help me do better, to make me do better, to learn, teach me how to tolerate. And today, I realize when I look back that yes, his effort made me such a good mentor, evaluator, worker, that I don't feel tired. Even at 55, I'm still rockingly running like a young horse. Yes or no? So that is the truth. Beta, try to understand. आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है मेरे को कभी किसी ने डांटा नहीं,
मुझे कुछ कहा नहीं. So you won't believe it that when you land up in the academy, you will get few abuses, which is not to hate you, but they will say it, they will use words which are considered vulgar or whatever you call it. Yes or no? Or you call that uncalled for, unparliamentary. They will use it just because they don't want your ego to become bloated. I know of an individual, bloated ego. They know how to hurt and insult others, but if it comes to them, they get irritated at the smallest portion. Why? Because they are wrongly educated. Wrongly educated. They do not know, and they do not agree with this, that if they will misbehave, it will come back to them. So what is very important? Be tolerant, be understanding, and be intelligent. Shant rahiye. Sorry for small sermons in between, but this is part and parcel of mental training. Sense of never give up. Never give up. That is also very important. Now what is happening? He's saying you are getting complicated. You are not able to complete the task. He's saying hurry up. Don't give up. Try it. Try one more method. Try other method. Keep trying. You will get some solution. And he will be deliberately increasing the time because he wants to see, will you give up? Don't give up. And sometime he'll say, okay, leave it. So just one more minute and try. If he still says, no, leave it. So follow, okay, sir. And then look at the task, because that is was a challenge. You've not been able to complete, at least look back where you went wrong and then you leave. But while you're looking back, they will understand that you are still involved in it. If you are really involved in it, do that. And if you're not, then there is nothing. They are able to judge. Dil laga ke kaam kar rahe the, nahi kar. Where you really giving your 100% not. If you are giving 100% and you are not giving up, beauty. You are a very good person. You will be able to do it. Determination की quality भी दिखती है इसमें. एक OLQ है ना, determination, वो भी दिखेगा. That is also part. The candidate must work with a never give up attitude. May not only give a complicated task, but may multiply difficulty by making alterations. बदलाव कर रहे नहीं. Thus the candidate may be pushed mentally to a stress level. एक लेवल पे खड़ा हो जाएगा कैंडिडेट की, बोलेगा यार पहले ही दिक्कत थी, अब और बढ़ा दी, कोई बात नहीं, वो टेस्ट कर रहा है. ट्राई योर बेस्ट विद ऑल द फोकस. रिजल्ट की चिंता मत करो. कर्मणस्य अधिकार सुमा फलेषु कदाचन. कहने का मतलब कि कर्म करिए, अच्छा से करिए, फल की इच्छा मत सोचिए वो मुझे सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा. एंजॉय करिए, you'll get selected. Trust me, you'll get selected. The candidate is expected to keep the momentum and keep exploring as instructed with a never surrender attitude. Is it clear? Okay, good. Ability to think in a flow in spite of being pressured. भाई प्रेशर पढ़ने के बाद in spite of being pressurized होना चाहिए. खैर कोई नहीं, समझ तो गए हो. The candidate must be able to think in a fluid fashion. इधर जाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये नहीं कि वो बोल रहा जल्दी करिए तो आप भूल गए कहाँ जाना. Don't do that. I will do it in spite of officer troubling. Do it. I'll do it, sir. Don't feel pressure. Sir, I'll do it. With blocking of solutions, troubling the candidate with blocking. अब आपने एक सॉल्व किया, उन्होंने बोला हटो, ये नहीं हुआ. Then I will do it. Then keep thinking. The candidate is pushed to think more solutions. Do it. Innovate. Do it. In case officer gives tough tasks, systematically thinking in different way. अगर tough task मिला है, जो कि मिलेगा, अच्छे कैंडिडेट हैं, मिलेगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टफ कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. Yes, I want to teach you something. Tell me, is it possible for you to eat an elephant? No. How can you eat your elephant? It's so big, but it is possible. If you cut it into pieces, छोटे छोटे टुकड़े करके आप एक एलिफेंट भी खा सकते. इसी तरह बड़े काम को, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को छोटा छोटा करके कंप्लीट किया जा सकता है. हाँ या ना? Yes or no? So you can eat an elephant provided you cut down the pieces. Similarly, you can do a complicated task provided you step by step do it. So don't worry. चिंता नहीं करने का. Try your best. You'll do it.
and error approach. And remember, trial and error is possible. Everyone is doing it. You know, there are normal procedure to do greetings to someone. अब हम लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं, वहाँ की ग्रीटिंग्स अलग हैं, फिर भी हम अपना बोलते गुड इवनिंग, तो बोलता है देन यू रियलाइज गुड इवनिंग मीन्स समथिंग एल्स, देन यू टॉक टू अ लोकल पर्सन, उससे पूछते वो बताता है गुड इवनिंग का मतलब ये होता है, आप बोलते you change it. So there may be n number of times what you are really doing with good intention may require innovation, may require a different approach. Never mind, do it. Trial and error is okay. Now, ability to be flexible. The candidate must have flexibility to think in different dimensions. ये नहीं कि बस एक ही solution सोच रहा है, एक इसके बाद दूसरा भी है, तो इसके बाद ये, then next, that's it. मान लीजिए कहीं पे आप अटक रहे हैं, तो आप दूसरे पे आइए, उसकी मदद से दूसरा देखिए दोनों, और पहले जहां पे अटक रहे अटकिए मत, keep moving, keep rocking, and in case the officer gives some idea or hint, then the candidate must gratefully thank the officer and move on to the same line along with it. अगर ऑफिसर ने बोला अच्छा तुम ये वाली ट्राई करो, इससे करो, do it. Sometimes one more thing I do not know, candidate must, of course, before we do that, like I also want to tell you something else. Flexible ये भी है, there are some times when you may get totally blocked, and at that point of time officer will say you can take suggestion from your colleagues. आपसे वो कहेंगे कि आप colleague से ले सकते हैं. बोलो राइट साहब. लेने का स्टाइल कॉन्फिडेंट होना चाहिए. भीख मत मांगो, don't beg them, but ask them confidently. That is, yes. Would you like to suggest any task? Yes. And whatever they say, focus and listen and see. And when they have completed, just mentally validate whether it is right or wrong. You find, okay, it is possible. Yes, it is possible. Thank you. It is possible. Let's do it. And do it. Got it? No point? Yes or no? Even taking suggestion has to have a confidence in you. Any time you may have the flexibility that you have not been able to think at that point of time. So what? Is given, no problem, but take it confidently. आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर लीजिए. कई बार मैं भी पढ़ाता हूं, कुछ टर्म्स भूल जाता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? You will kill me with a bullet? No. It is natural. I am human being. I may do that error, but learn from it. Is it clear? Okay. Gratefulness. Once you finish off, be thankful to your candidates. Say thank you very much to them, and then you can thank you, sir, and leave. Why you should thank you, sir? Because after all, he had the patience to listen to your tricks and your jokery, if that you call it. Not that. Idea is कि वो अगर ऐसे कह रहे हैं how to do it, so you should listen, say thank you sir, thank you friends, thank you sir, and leave. भाई उन्होंने भी तुम्हारे को इतनी देर सुना, he watched your things, so thank तो बनता ही है. Anyway, that's just a thought process. Be grateful to your team member, enjoy your work. Important note, अब आते ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेक्स ए मिनी इंटरव्यू. पहले एक मिनी इंटरव्यू लेता है, उसको लाइट मत लेना. जैसे इंटरव्यू में बोले उससे कॉन्ट्रडिक्ट ना करना. डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ. जो बोल रहा है वो ही सच्चाई से आंसर देना. सम पीपल दे वांट टू इम्प्रेस, तो वो कई बार क्या करते हैं, झूठ मूठ कुछ और बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे, कहीं कुछ बोल. व्हाट इज द पॉइंट टू इम्प्रेस? You are clear who are you? Just go and tell the same thing to the interviewer and also to the GTO whether he takes the mini interview. Is it clear? Okay. They will take to the before they introduce. The group testing may not increase the difficulty level of the task by removing resource. May not. वो चाहेगा तो difficulty बढ़ा सकता है. ये याद रखिएगा. So don't worry about that. Even if he makes it difficult, you know it is possible. अगर possible नहीं होगा तो वो करेगा नहीं. वो और deep answer देखना चाहता. So it is possible. So do it. Is it clear? Think further. Never. Remember, he has not much time to keep troubling you unnecessarily. He is not troubling you. He is not interested to
unnecessary trouble you until and unless he is interested in you. जब वो आपसे रुचि ले रहा होगा तो जाहिर है आपको तंग करेगा, ये नहीं होगा तो क्या करोगे, ये नहीं होगा तो क्या करोगे। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है आज के ज़माने में कि आपके लिए समय जाया करें और बार बार पूछें। वो तभी पूछ रहा है जब आप में रुचि, या तो आपको जटिल देके आपसे संतुष्ट हो जाएगा तो भी आपको सिलेक्ट करेगा, पर अगर वो जटिल बना रहा है तो ये जान जाइए कि वो आप में रुचि ले रहा है। इफ ही इज ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट, ही वांट्स टू लुक एट योर डीपर थॉट। और डीपर थॉट क्यों ले रहा है? बिकॉज ही इज आइडेंटिफाइंग दैट यू हैव पोटेंशियल, ही वांट्स टू सी योर थिंकिंग। कई बार आप में से बहुत सारे ओवर स्मार्ट होते तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जब जटिलता आता नहीं कर पाते हो। इजीली भी वो कॉम्प्लिकेट करता है कि देखें तो सच्चाई है कि सीख के आए कहीं से, बस उत्तर सीखा है कर रहे हैं, ये नहीं। दिमाग, उनको दिमाग टेस्ट करना है, आपका रवैया टेस्ट करना है, आपकी समझदारी टेस्ट करनी है, आपकी टेंशन को आराम से लेना टेस्ट करना है। सो रिमेंबर दैट the candidate must remain calm and composed and truthfully answer all queries, identifying solutions to the challenge posed. जो भी पूछे बताइए आराम से। Remember, candidate must not execute in an authoritative style. मैं बता चुका हूँ, सीधे कमांडर बना दिया, okay guys, you got to do this, do that, as you have seen a lot of Hollywood movies, or some journal speaking. You're not becoming journal. I remind you again and again. I tell you that. आप डायरेक्टली जर्नल नहीं बनेंगे, आप लेफ्टिनेंट बनेंगे तो आप में एक वाजिब पोलाइटनेस होनी चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, पर शब्द पोलाइट होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू सडनली बिकम द हाई फाई स्टाइल। इज इट क्लियर? डोंट बिकम अथॉरिटेटिव, बट प्रेफरेबली एज अ कैप्टन ऑफ द टीम। इज इट क्लियर? ओके, बी फर्म बट बी पोलाइट इन योर वर्ड्स। कैंडिडेट मस्ट गिव वंस बेस्ट फोकस एफर्ट इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। पूरी फोकस लगाओ, हो जाएगा यार। जानते हो कौन लोग कर नहीं पाते? जिनको डर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, या जिनको लगता है कहीं मजाक न बन जाए। अरे छोड़ो मजाक, बना लेना जिसको मजाक। मोदी जी को तो किसी ने छोड़ा नहीं उनके मजाक बनाने में। विद अ पर्सन विद सच पोटेंशियल, एनीबडी whom you call potential, APJ Abdul Kalam, never, people did not spare him also. Right, so nobody in this world, don't bother about anybody making fun of you. Never bother who's making fun of you, no problems. Just do it and focus. एक पॉइंट। दूसरा, नया तो सब कुछ होता है। आप लोग स्कूल से बाहर आए, कॉलेज में नया नहीं है। अब कॉलेज से आगे जाओगे, नया नहीं है। Everywhere it is new. So don't think that this is new, so I can't do it. Apply your mind, you'll do it. Next. Candidate should preferably get the task completed by applying one's own intelligence. अपनी बुद्धि लगा। But in extreme condition, अगर stuck हो गए and officer permits him, then take suggestion as a team. मैंने अभी बताया कि अगर आपको टीम बोलता है कि भाई चलिए आपने, चलिए टीम से ले लीजिए, कॉन्फिडेंटली लीजिए। Take suggestion confidently.